Hello students, myself Dr. Nisha Jain. फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं और आज मैं आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, आपका फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पेपर 2 जो है पीएससी पार्ट 2 का, उसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है इसका पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी फीमेल हार्मोन्स एंड मेल हार्मोन्स को डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्शन एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन। आज हम वेरियस फीमेल साइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोएस्ट्रस एंड पॉलीएस्ट्रस। What is monoestrus and what is polyestrus? Some species such as cats, cows and domestic pigs are polyestrous, meaning they can go into heat several times per year. एक साल के अंदर जब अगर किसी के अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस थ्रू आउट ईयर होते हैं, दैट इज दैट फीमेल गोज इनटू हीट फॉर सेवरल टाइम्स, then they are termed as polyestrous. Seasonal polyestrous animals or seasonal breeders have more than one estrus cycle during a specific time of the year. अगर किसी के अंदर some species goes in a heat period for twice per year, एक साल में 2 बार, then they are termed as diestrous. Canines are diestrous. Polyestrous और diestrous के अलावा होते हैं monoestrous species such as bears, foxes, wolves. They have only one breeding season per year, typically in spring, to allow growth of the offspring during the warm season and to aid survival during the next winter. एक साल में केवल एक ही ब्रीडिंग सीजन होता है, तब दैट लेडी कैन बी प्रेग्नेंट. This is a picture showing monoestrus and polyestrous cycle. Now in monoestrus, you can see there are various phases, that is anestrus, proestrus, estrus, ovulation, implantation, gestation, parturition and lactation. Then these are the following stages which are seen in the picture. Now estrus cycle. The estrus cycle or estrus cycle is the set of recurring physiological changes that are induced by reproductive hormones in most mammalian females. Estrus cycles start after sexual maturity in females and are interrupted by anestrus phases or by pregnancies. Typically, estrus cycles continue until death. Estrus cycle की 4 stages होती हैं: proestrus, एस्ट्रस, मेटेस्ट्रस एंड एनेस्ट्रस. प्रोएस्ट्रस के अंदर क्या होता है? प्रोएस्ट्रस के अंदर फॉलिकल्स इनलार्ज हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, वेस्कुलरिटी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंक्रीजेस, दैट इज जो वेसल्स होते हैं वो उनके अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स बिगिन टू ग्रो, एस्ट्रोजन लेवल पीक पे पहुंच जाता है. The vaginal epithelium proliferates and the vaginal cytology shows a large number of non-conified nucleated epithelial cell. अगर हम vaginal smear लेंगे तो उसके अंदर जो cells आते हैं epithelial cells, उनको देखकर हम आराम से बता सकते हैं कि ये कौन सी स्टेज है estrus cycle की. अगर उसके अंदर non-conified nucleated epithelial cells होंगे, then it is a proestrus stage. Next stage is termed as estrus. It allows the male to mount. Estrogen decreases. Luteinizing hormone surge occurs. Ovulation 24 to 48 hours after surge of LH, luteinizing hormone. Uterine motility high with contraction moving towards oviduct. Sperm transport is optimal and cervical mucus become increases. Third जो stage है, that is metastrus. This phase is characterized by the activity of corpus luteum which produces progesterone. Estrogen level low हो जाएगा, corpus hemorrhagicum present, ovulation in cow, uterus contraction subside, endometrial gland continue to grow and become coiled in cattle, bleeding occurs,
FSH इंक्रीजिंग ट्रिगरिंग ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल। डायस्ट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरोन हाई हो जाता है, FSH low but increases at some point to cause growth of pre-ovulatory follicle. Uterus जो है it secretes fluid but the volume of the fluid decreases. Contraction stops, corpus luteum regresses at the end of this period in the female. Anestrus के अंदर it refers to the phase when sexual cycle rest. ये जो resting stage होती है इसको हम actually anestrus कहते हैं। अगर ये जो एस्ट्रस साइकिल के फेजेस अगर हम देखें तो ये डिफरेंट होते हैं। इट इज डिफरेंट इन काव, इन ईव, सो एंड मेयर। काव के अंदर एस्ट्रस 21 डेज का है, प्रो एस्ट्रस 3 to 4 डेज, एस्ट्रस 12 to 18, मेट एस्ट्रस 3 to 4 डेज। ये है, दिस इज द विजाइनल स्मीयर पिक्चर। दिस इज द स्लाइड when is made from the vaginal smear of the rat. रैट के एस्ट्रस साइकिल के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस की, वो इसके अंदर दिखाई गई हैं। किस तरह से एपिथेलियल सेल्स जो हैं, यू कैन सी इन प्रोएस्ट्रस, in estrus, in metastrus, and in diestrus. These are nucleated epithelial cells. Here the epithelial cells are not nucleated. So these are the different cells which are present in the vaginal sperm. These are different epithelial cells. On the basis of these epithelial cells, we can easily estimate the stage of estrus cycle. Females of reproductive age experience cycles of hormonal activity that repeat at about 1 month interval. Every cycle of woman's body prepares for potential pregnancy, whether or not that is the woman's intention. हर menstrual cycle के अंदर women is ready for pregnancy, but it depends she wants to get pregnant or she doesn't want to get pregnant. The term menstruation refers to the periodic shedding of the uterine lining. Menstruation का मतलब होता है periodic shedding of the uterine lining. The average menstrual cycle takes about 28 days, occurs in phases like follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. Menstrual cycle जो है हर फीमेल के अंदर एवरी 28 डेज में रिपीट होती है, जिसके अंदर फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटल फेज होते हैं। There are four major hormones or chemicals that stimulate or regulate the activity of the organs involved in the menstrual cycle. Menstrual cycle को कंट्रोल करने के लिए चार इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं: फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और अगर हम विमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 4 फेजेस में मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर एंड ल्यूटल फेज, ओव्यूलेशन फेज वन इज द सेम थिंग। फॉलिकुलर फेज अगर हम बात करें तो दिस फेज स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड। फॉलिकुलर फेज का मतलब जिस दिन हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, दैट इज द फर्स्ट डे हम काउंट करते हैं उसको, और ये हमारा फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स: two hormones, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, are released from the brain and travel in the blood to the ovaries. FSH और LH hypothalamus से रिलीज होके और ब्लड में आ जाता है एंड ओवरी तक पहुंचता है। The hormones stimulate the growth of about 15 to 20 eggs in the ovaries, each its own shell called follicle. यहाँ पर 15 से 20 egg का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर। These hormones FSH and LH trigger increase in the production of the female hormone estrogen. ये दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। एस्ट्रोजन लेवल राइज होता है लाइक ए स्विच, it turns off the production of the follicle stimulating hormone. This careful balance of the hormone allows the body to limit the number of follicle that mature. जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो FSH का लेवल कम हो जाता है। As the follicular phase progresses, one follicle in one ovary becomes dominant and continues to mature. इन इतने सारे follicles जो बने थे ओवरी के अंदर, उसमें से एक follicle जो है वो mature होना चालू हो जाता है। This dominant follicle suppresses all the other follicles in the group. As a result, they stop growing and die. ये एक तो ग्रो करना चालू कर जाता है, बाकी सारे सप्रेस हो जाते हैं फॉलिकल्स। The dominant follicles continue to produce estrogen, और ये जो फॉलिकल है ये कंटिन्यूस एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन चालू रखता है। सेकेंड होता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में एक्चुअली क्या होता है, ओवुलेशन होता है, जिसको हम कहते हैं ओवुलेशन। ये होता है डे 14 के ऊपर। पहले दिन से फॉलिकुलर फेज आया, 13 दिन तक, 14 डे में ओवुलेशन हो गया। नाउ द ओवुलेटरी फेज इज द मिड पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मैंने बताया 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 14 डे इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दैट साइकिल। ठीक है,
The next menstrual period starting about 2 weeks later. During this phase, the following events occur. The rise in the estrogen from the dominant follicle triggers a surge in the amount of luteinizing hormone that is produced by the brain. Now, एस्ट्रोजन जो है फॉलिकल सिक्रीट कर रहा है, फॉलिकल जो एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सर्च कर देता है. दिस कॉजेज द डोमिनेंट फॉलिकल टू रिलीज इट्स एग फ्रॉम द ओवरी. एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, फॉलिकल के अंदर से एग जो होता है वो ओवरी में से निकल जाता है. एज द एग इज रिलीज्ड, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन. इट इज कैप्चर्ड बाय द फिंगर लेग प्रोजेक्शन ऑन द एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. जैसे ओ निकलता है तो ओवरी के पास में ओविडक्ट होता है, जो कि फिंगर लेग प्रोजेक्शन होते हैं उसके, वो उस ओविडक्ट में अंडा आ जाता है. Also during this phase there is an increase in the amount of thickness of the mucus produced by the cervix. If a woman were to have intercourse during this time, the thick mucus captures the men's sperm, nourishes it and help to move towards the egg for the fertilization. अब इस टाइम पे जैसे ही एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, अगर इफ दिस एग कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म ऑफ द मेल, then it get fertilized here. Okay. Then luteal phase. The luteal phase of the menstrual cycle begins right after ovulation and involves the following process. Once the egg is released, the empty follicle developed into a new structure called as corpus luteum. Egg तो release हो गया, बाकी follicles बच गए, वो follicle अब क्या कहलाते हैं? Corpus luteum. These corpus luteum secrete another hormone which is termed as progesterone. It prepares the uterus for the fertilized egg to implant. अब ये corpus luteum क्या करता है? Progesterone को secrete करता है. ये प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को प्रिपेयर करता है कि एग जो फर्टिलाइज्ड एग नीचे आ रहा है वो प्रॉपर्ली इम्प्लांट हो जाए. इफ इंटरकोर्स हैज टेकन प्लेस एंड मेन स्पर्म हैज फर्टिलाइज्ड द एग, the fertilized egg will travel through the fallopian tube to implant in the uterus. The woman is now considered pregnant. अगर वो एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो चुका है तो ये एग यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा. इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इट पासेस थ्रू द यूट्रस, not needed to support a pregnancy. The lining of the uterus breaks down and shed and the next menstrual periods begin. अगर ये egg fertilized नहीं हुआ है तो this egg will come along with the blood from the uterus and this bleeding is actually termed as the menstrual or menstruation. This is the ovarian cycle. I already told you hypothalamus, it acts on, it releases the gonadotropic releasing hormone. These gonadotropic releasing hormone acts on the pituitary gland. The anterior pituitary gland releases two hormones, that is FSH and LH. FSH, LH. These acts on the ovary, that is the full follicles, and and as a result of which these follicle produces the estrogen. And when this follicle, if the ovulation occurs, then it will turn into corpus luteum and it will produce the progesterone. This is the menstrual and its phases. Now you can see this is a figure of the complete reproductive system of the female. This is the uterus, this is the ovary, and this is funnel like structure is oviduct. ठीक है, ये ovary है, ये uterus है, ये cervix है, this is vagina. Now ovaries response for the egg to be released. यहाँ पर जैसे ही egg बना, egg is released from the ovary and it comes into the fallopian tube. Now uterus lining grows, egg awaits fertilization. Oviduct से ये uterus में आ जाएगा egg. अगर fertilized होगा तो यहीं पर implant हो जाएगा और women will become pregnant. And if it is not fertilized, uterus lining break होंगी यहाँ से and the blood will come out along with the egg. This is the beginning of the period. So this is all about the menstruation and its phases. So this is all about the various cycles in females. So I stop here. We'll continue this chapter with the part 3.